Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss difference between Istisna and Ijarah. So in the previous video we had discussed the difference between Istisna and Salam, but in this video we are going to discuss the difference between Istisna and Ijarah. So now what we have studied in Istisna is that a manufacturer undertakes to make the required goods with his own material. Means Istisna ke case mein buyer approaches the manufacturer and he asks the manufacturer to manufacture this kind of product for me, and he provides the necessary specifications to the manufacturer. Then manufacturer manufactures the commodity or the product by using his own materials. So once the manufacturer gets the raw material, then he undertakes the work required for making the ordered goods with it. So Istisna की केस में मैन्युफैक्चरर खुद ही मटेरियल यूज़ करेगा and he will manufacture the goods for the buyer or for the client according to his specifications that were basically provided by the customer or by the client. Now what happens in Ijarah is that Ijarah में ये होता है कि the services of a person are hired for a specified fee which is paid to him. इजारा में हमने दो टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की थी, या आप कह सकते हैं कि देयर वर टू वेज़ इन विच वी डिस्कस्ड इजारा. एक तो इजारा हमने इस केस में डिस्कस किया था, दैट वाज एनालॉगस टू द टर्म लीजिंग, जिसमें लीजर एंड लीजी का कॉन्सेप्ट था. एंड देयर वाज आल्सो अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इजारा जिसमें हम कहते थे कि इजारा मीन्स टू हायर द सर्विसेज ऑफ अनदर पर्सन इन रिटर्न फॉर फी विच इज़ पेड टू द हायर्ड पर्सन. जो सेकंड केस था, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी इजारा की यूज़ हुई थी, वो उस केस में हमने यूज़ की थी कि एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन की सर्विसेज को हायर करता है और इन रिटर्न उसको फ़ी पे करता है. तो इस्तिस्ना एंड इजारा में यही डिफरेंस है कि इस्तिस्ना में मैन्युफैक्चरर अपने ही रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए गुड्स मैन्युफैक्चर करता है बायर के लिए. बट इन केस ऑफ इजारा व्हाट हैपन्स इज़ दैट a person just hires the services of another person and in return he pays fee to another person. इजारा में जस्ट सर्विसेज को यूटिलाइज़ करने का कॉन्सेप्ट है और उन सर्विसेज के बदले उसको फ़ी पे की जाती है. लेकिन इस्तिस्ना के केस में मैन्युफैक्चरर आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट, बट इन एडिशन टू दैट, ही इज़ ऑल्सो यूटिलाइजिंग हिज ओन मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बट अलॉन्ग विद दैट जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी मैन्युफैक्चरर का ही है. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड इजारा. Okay, now the next question is that when the required goods have been manufactured by the seller, he has to present them to the purchaser. एक बार goods manufacture हो जाए, then manufacturer has to deliver those goods to the purchaser. But now in this case there is a difference of opinion among the Muslim jurists regarding whether or not the purchaser has a right to reject the goods at this stage. Means once the manufacturer has manufactured the goods, then whether the client or the customer has right to reject those goods or not. एक मरतबा गुड्स रेडी हो चुकी हैं, गुड्स बन चुके हैं, तो क्या इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है, क्या वो उन गुड्स को रिटर्न कर सकता है या नहीं. तो हमारे पास जो व्यूज़ आए हैं उन व्यूज़ के अकॉर्डिंग इमाम अबू हनीफ़ा इज़ ऑफ द व्यू दैट द क्लाइंट शुड हैव द ऑप्शन ऑफ सीइंग, द कस्टमर शुड हैव द ऑप्शन ऑफ सीइंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज खियारुर रुया. इसका ये मतलब है कि एक मरतबा जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, देन द क्लाइंट मस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ सीइंग, ही मस्ट हैव द राइट टू सी द गुड्स, दैट वेदर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर और नॉट. क्या वो गुड्स या क्या वो कमोडिटी जो कि मैन्युफैक्चरर ने बना ली है, क्या वो उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनी है जो कि क्लाइंट ने या कस्टमर ने बताई थी या नहीं. अगर उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनी तो अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफ़ा द कस्टमर और क्लाइंट कैन रिटर्न द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. बट अगर वो स्पेसिफिकेशंस फॉलो हुई हैं जो क्लाइंट ने कस्टमर ने बताई थी मैन्युफैक्चरर को, then the customer is bound to accept the manufactured goods.
क्योंकि हमने पढ़ा है इस्तिस्ना इज़ अ सेल, and if somebody purchases a thing which is not seen by him, he has the option to cancel the sale after seeing it. So the same principle is also applicable to istisna. इस्तिस्ना भी हमारे पास सेल ही की एक काइंड है, और सेल के रूल्स में हमें ये कहा जाता है दैट द कस्टमर हैज़ द ऑप्शन टू लुक एट द गुड्स एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टू डिसाइड दैट वेदर ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द गुड्स और ही इज़ गोइंग टू रिजेक्ट द गुड्स. So if the goods are according to the specification of the customer, then he has no right to reject the goods, but the main point is that the customer should have the option of seeing according to Imam Abu Hanifa. Now what about the other view? Imam Abu Yusuf says that if the commodity conforms to the specifications agreed upon between the parties at the time of the contract, the purchaser is bound to accept the goods and he cannot exercise the option of seeing. अच्छा, इमाम अबू यूसुफ ये कहते हैं कि अगर specifications decide हो चुकी हैं at the time of contract, then the purchaser has no right of seeing. Purchaser cannot exercise the option of seeing. Means एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के दरमियान ये डिसाइड हो चुका है कि प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशंस होंगी. तो जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है तो अब कस्टमर के पास कोई राइट नहीं है कि वो उन गुड्स को या उस कमोडिटी को रिजेक्ट करे, बट द कस्टमर इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट क्योंकि स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो चुकी हैं. तो अब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द कस्टमर इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द manufactured goods and he cannot exercise the option of seeing. अब वो option of seeing की option को seeing की जो option है उसको exercise नहीं कर सकता, और ये बहुत से जो हमारे पास scholars हैं उनका यही view है. क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल का जो हमारा मॉडर्न ट्रेड है या जो इंडस्ट्री है उसमें भी यही बात एप्लीकेबल होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ द मैन्युफैक्चरर हैज़ यूटिलाइज्ड ऑल हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड ही हैज़ यूज्ड द रॉ मटेरियल एंड ही हैज़ लाइक इंकर्ड सम कॉस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, और उसके बाद अगर कस्टमर is exercising the option of seeing and he is not satisfied with the product and he is rejecting the manufactured goods, so it would be a huge loss for the manufacturer. So अगर एक मर्तबा specifications decide हो चुकी हैं at the time of contract, तो फिर goods बनने के बाद product manufacture होने के बाद कस्टमर के पास option of seeing नहीं होना चाहिए, क्योंकि it would be then a huge loss for the manufacturer. And this thing is also practiced in modern trade and in modern industry, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी expensive goods manufacture होती हैं. अगर हम आजकल की trade and industry को देखें तो अगर ये काम होता है कि option of seeing customer को provide किया जाता है, so it will create problematic situation with respect to modern trade and industry. So that's why normally इमाम अबू यूसुफ के जो उनकी व्यू है उसको फॉलो किया जाता है in this regard. So the next concept is regarding the time of delivery. So इस पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, but still again we are going to revise it. It is not necessary in istisna that the time of delivery is fixed. टाइम ऑफ डिलीवरी का फिक्स होना ज़रूरी नहीं है. However, the purchaser may fix a maximum time for delivery, which means that if the manufacturer delays the delivery after the appointed time, he will not be bound to accept the goods and to pay the price. It means that you can include a panel clause in the contract that in case the manufacturer delays the delivery of goods, so he will have to pay a penalty of this much amount, or he will have, like, you can punish the manufacturer that if he delays the delivery of a commodity or a product. So time of delivery is like, it is not an obligatory step that you must fix the time of delivery, but there should be a maximum time of delivery, that maximum आपने इतने दिनों में मुझे ये product deliver कर देना है, and in case you fail to deliver the commodity or the required product, then you will have to pay this much penalty. या मैं आपको full price pay नहीं करूँगा, I will pay you this much amount because you have delayed the delivery of a product or a commodity. So you can include a penal clause in this regard.
Okay, the price in istisna may be tied up with the time of delivery, and it will be permissible if it is agreed between the parties that in case of delay in delivery, the price will be reduced by a specified amount per day. This is permissible in istisna. Okay, you can tie up the price with the time of delivery in case of istisna, but not in case of सलम. इस चीज़ को, इस बात को आपने माइंड में रखना होगा कि सलम के केस में आप ऐसा काम नहीं कर सकते. बेसिकली सलम के केस में तो प्राइस पेमेंट इन एडवांस होती है, तो इस वजह से आप टाइम ऑफ डिलीवरी के साथ प्राइस को टाई अप नहीं कर सकते. बट यहाँ इस्तिस्ना के केस में द प्राइस मे बी इन एडवांस, और प्राइस मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और प्राइस मे बी व्हेन द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, सो देन द कस्टमर इज़ गोइंग टू पे द प्राइस. सो इस केस में आप पेनल क्लॉज इंक्लूड कर सकते हैं दैट इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ही विल be fined, or he will have to pay penalty of certain amount you will fix with the manufacturer at the time of contract. So in this video we discussed the difference between istisna and ijara, and we also discussed certain views and certain points with respect to time of delivery and with respect to acceptance of goods. So in the next video we are going to discuss istisna as a mode of financing. Thank you class.